there is a captive 300 students or something who are always benefiting, plus of course the community. तो ये सारे लोग हैं now. Lalita and Shoma, another Shoma, you people come. I would say Anshu and Rubina also. Why don't you people also come and interact a little bit or ask a question which is more relevant, more आप लोग डील करते हैं रोज ग्रास रूट्स लोगों से. हाँ हाँ, तो नहीं हम कहाँ, हम स्कूल थोड़ी चलाते हैं. बट ये देखिए कि रोज ये लोग डील करते हैं लोगों से जो इनके पास आते हैं जरूरतों के लिए. तो मुझे लगता है उस हिसाब से तो बहुत कम बोला इन्होंने. टाइम ही कम था. शहनाज बोल भी रही थी 5 ही मिनट बोलना है. हाँ, वो 50,000 रुपीज क्या मिले थे वो तो बताओ. वो छूट गया. क्या अवार्ड मिला था ना 50,000 रुपीज. हाँ, तो ये जो बबीता जो है ये मेवात में काम करती हैं. एंड यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ नमिता भंडारे. सो नमिता राइट्स ऑन वुमेन इश्यूज. सो शी हाँ, तो उन्होंने इनके वो जाके स्टोरी की थी कि डीएफ वहाँ क्या काम करता है, औरतें कैसे काम करती हैं, ऑल दैट. एंड देन Sunanda Bhandare award hai. I mean, they have institutionalized on her father's name or grandfather's name, who was a big advocate नहीं, Supreme Court judge थे. तो उनके नाम पे एक अवार्ड है. तो उन्होंने अवार्ड इनको दिया 50,000 का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड. एंड इनकी वजह से डीएफ को भी दिया. आई वोंट से हमारी वजह से इनको दिया, आई वुड से इनकी वजह से डीएफ को भी दिया. तो हमने अभी 2 घंटे पहले पूछा क्या किया पैसे का, तो बोली कुछ पैसे और मिला के जमीन खरीदा. जी नहीं, दोबारा करें तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे आप शादीशुदा है थी. ऑफ कोर्स ये नहीं है, ये भी नहीं है, नूरी भी नहीं है, तुम नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम्हारा तो पता था तुम हो शादीशुदा. ये भी हैं शादीशुदा. सुषमा, ओ योर गेस इज राइट. सब एलिजिबल हैं. जी पूछूं? ओ अच्छा, आप शादी करना चाहती हैं मैडम? आप शादी करना चाहती हैं? अब आप बहुत सक्सेसफुल हो चुकी हैं, क्या आप शादी करना चाहती हैं? 5 साल तक तो नहीं नहीं करना चाहती हूँ शादी. वेरी गुड. फिर वो हस्बैंड फिर ये पपेट डांस करवाते हैं कि तुम मेरे अंडर हो, मैं बोलूंगा तो तुम देखोगी, तुम बोलोगी तो मैं जो उनके इशारों पे नाचना पड़ता है. नहीं मिलता, इतनी जल्दी नहीं मिलता. जी मैंने भी नहीं सोचा अभी शादी के लिए. हमें और करना है कुछ अपने. अभी तो इन्होंने सोचना भी शुरू नहीं किया. जी सर, मैं भी नहीं करना चाहते भी शादी. नहीं करना चाहती? नहीं, ये नहीं करना चाहती. हम तो करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जो ये लाइफ है ना हमारी, वो सारी खत्म हो जाएगी. और काफी कम मेवात में ऐसा नहीं है कि आसपास कहीं दे दिया ना पापा ने तो कम से कम 5% ऐसा रहेगा कि हम अपना जी सकेंगे, और नहीं बाकी का. मैं देखती हूँ ना एरिया हमारा ऐसा ही है, तो इस वजह से बिल्कुल मन नहीं है. ऑप्शन मिल जाए तो नहीं करूंगी. ऑप्शन मिल जाएगा तो नहीं करूंगी. अभी थोड़ा ये ऑप्शन का चल रहा है. मेरा नहीं चल रहा है, पेरेंट्स का चल रहा है, वो लोग ढूंढ रहे हैं. हम भी नहीं करना चाहते हैं. नहीं करना चाहती? नहीं. जी अच्छा. तो ये पूछ रही हैं कि आप लोग जो भी पैसे कमाती हैं, क्या आप अपने मर्जी से खर्च कर पाती हैं या किसी और की मर्जी चलती है? नहीं, अपना मतलब जहाँ जिसका जरूरत पड़ जाता है वो. तो आपका अपना कंट्रोल है आपके पैसा पे? यस सर. जो भी मैं पैसा कमाती हूँ वो अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए यूज करती हूँ, बाकी मिस यूज उसका नहीं होगा. तो मिस्टर यूज? मिस यूज नहीं होगा. नहीं, मेरे पैसे मेरे हैं.
मेरे पैसे मेरे पास रहते हैं, पर फिर भी मैं सारा पैसा घर वालों को अपनी मर्जी से देती हूँ। हाँ, मेरे पैसे मैंने खुद की पढ़ाई में भी लगाए हैं और घर में भी दिए हैं। मैं अपने पैसों से अपना जो भी है निजी खर्च वो निकालती हूँ और घर वालों का भी सपोर्ट करती हूँ कि कुछ हेल्प मिल जाती है मेरे पैसों से। मैं अपने ही कमाती हूँ, अपने ही रखती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ये रहा कि मैं जो कमाऊँ अपने पैसों से वो अपने पेरेंट्स पे लगाऊं, तो अपने पेरेंट्स पे लगाऊं, और बस। मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी मॉम है, 2 सिस्टर्स हैं, तो उनके लिए सेविंग। जी हाँ, ये तो सही बात है। ओनली या हाँ 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 जी, वो शायद एरिया का भी असर होगा। आज जीवन बदल गया, मतलब आप सबसे मिलके। मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम यूपी में काम करते हैं और हमने ऐसा सिमिलर एक प्रोग्राम किया था जहाँ सोशल प्रोटेक्शन पे, स्कीमों पे हम एक टीम बना रहे थे। और मेरा शुरू से था कि लड़कियां लेके आओ, लड़कियां लेके आओ। जैसे बबीता ने भी बोला कि हमारे कम्युनिटी में हम रोल मॉडल की तरह एक बन चुके हैं, बच्ची यहाँ पढ़ने जाने लगी हैं। तो और इन्होंने भी बोला कि पहले जाते थे, हूटिंग होती थी, लोग परेशान करते थे, कहाँ जा रही हो, ये है वो है। आई थिंक आपने बोला, तो उसमें कोई लर्निंग है ऐसा, मतलब आपको क्योंकि यूपी में हम काम करते हैं, अभी भी वो चैलेंज है। अगर 20 की टीम है तो 2-3 लड़कियों से ज्यादा नहीं है। मुझे नहीं पता आप कैसे, आज जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, सीख है, मोटिवेशन है, कुछ ना कुछ, तो कुछ ऐसा लर्निंग है, क्योंकि हमारे को अभी भी बहुत चैलेंज है। 50 आप ले जा सकती हैं इनको नहीं, आप आ जाओ सर, आप प्लीज आ जाओ फरुखाबाद। कुछ ऐसा इस पे कोई टिप्पणी, कुछ कुछ देना चाहते हो, क्योंकि आपने इतना उस चीज से आप गुजर चुके हो। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने गांव में जैसे सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है कि जो सबसे पढ़ी लिखी लड़की है वो ही झंडा फहराएगी। तो मैं अपने गांव में पिछले 5 सालों से एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे मैं झंडा फहरा रही हूँ, और उसमें एमएलए और बाकी के जो हैं बड़े बड़े लोग आते हैं, वो मेरे हाथों से झंडा फहराते हैं। तो फहरवाते हैं, देखते हैं कि बाकी जो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो वो देखते हैं कि सीखते हैं कि अगर मेरी बेटी भी होती तो ये यहाँ पे होती, तो खुश होते हैं। पहले वही लोग कमेंट करते थे, मत पढ़ाओ, सियानी होगी, ये शादी कर दे, 10th से बोलना चालू कर दिया था, और अब उन सब का मुंह बंद हो गया है और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यह है बस। आसपास के जो गांव, बाहर से न्यूज चैनल वाले गांव में अक्सर आते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि कोई लड़की चाहिए हमें बोलने के लिए। तो हमारा घर, पापा बेशक हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी लो है, तो मेरे पापा ने हम सभी बहन भाई पढ़ाए हैं, तो हमारे घर एक एजुकेशन के उस पे सही है, तो हमारे घर लेके आ जाते हैं कि इनको पता होगा सारा, और हमारे इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं। मतलब हिस्ट्री से क्या है मैम? तो ये लोग ना ये लोग काफी, अब जैसे अभी मैं व्हाट्सएप दिखाऊंगा बाराबंकी के ग्रुप का, तो कल से वहां 2-3 टीवी चैनल वाले इन लोगों के यहाँ बैठे हुए हैं स्टोरीज करने के लिए। दे आर वेरी यूज्ड टू टॉकिंग टू मीडिया एक्सपोज, आते रहते हैं। तो काफी इनका चलता रहता है। कई बार तो तंग हो जाते हैं ये लोग कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, हमारा काम रुक रहा है एंड ऑल दैट। तो इट्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि ये नॉर्मल प्रोग्रेसिव स्टोरी है, लेकिन हमको लगता है कि शायद वो इनटू एक्स जो है ना, वो डिजिटल की वजह से कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड दैट इज अ रिसर्च टॉपिक, that what is the research question, how much digital intervention actually aggravates
in making those changes, which otherwise would have been achieved in much longer duration or with much more difficulty, जैसे कई लोग हैं कि डिजिटल से कुछ भी करो तो उस एजुकेशन को अचीव करने के लिए भी घर से बंदिश कम होती है। ठीक है, कंप्यूटर सीख रहे हैं, आईटी सीख रहे हैं, डिजिटल सीख रहे हैं, और लड़की के हाथ में अगर डिवाइस आ जाता है और एज ए स्कीम आता है, ये हम लोगों की एक लर्निंग है डीएफ की। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक वर्ड निकाला कि वहां गांव में जाके अब हमको बोलना है ये सेंटर की डीएफ का स्कीम ही यही है कि ये सिर्फ लड़कियों को डिवाइस देगा। तो लोगों ने फिर सोचा अच्छा ये स्कीम है तो हम अपने लड़कों को तो नहीं बढ़ा सकते आगे। पहले बोलते थे कि इसको दे दीजिए, इसके साथ ये लड़की काम कर लेगी। हमने कहा स्कीम ही नहीं है ऐसी। तो वो स्कीम वर्ड जो है या रूल या कुछ ऐसा लेके आप आइए, तो उसकी वजह से लोग बोलते हैं अच्छा यार चलो लड़की के बहाने डिवाइस ही आ जाएगा तो हम भी थोड़ा खेल लेंगे, एंड देन धीरे धीरे वो दैट बिकम्स द एम्पावरमेंट टूल। पीपल वांट टू आस्क समथिंग, वी हैव 10 minutes. I would, if you don't mind, I would like to share a study. Yes. So why don't you come here? Other people will see you. May I just speak because I don't remember the actual figures, so I'll just. मैं थोड़ा इधर बैठ सकती हूँ? अच्छा. हाँ, नीचे बैठ सकते हैं हम लोग। मतलब हम चलो कहीं भी बैठ जाओ, आप लोग ऊपर चले जाओ, पीछे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, चलो जाके बैठ जाओ। शोमा के साथ भी कुछ लोग बैठ। हाँ जाओ, 2 लोग वहां पीछे बैठ जाओ। धन्यवाद, आओ। हाँ बैठ, हाँ बैठ। वहां बैठ जाओ। So I just wanted to share बहुत छोटा करके एक there was so I work for this organization, research organization called India Development Foundation. We inform policy, so we do a lot of impact evaluations. So for DEF, we had evaluated a program that they ran with Facebook called GOAL, Going Online as Leaders. When I was asked to sort of be a part of this panel, I thought I'd just like to share with you that this is, of course, this comes from ground and this is very valuable, but actually we've done a very rigorous impact evaluation of the kind of programs that DF runs, and it is amazing what we found. So this program is called GOAL, Going Online as Leaders. It is something that DF did with Facebook. It was Facebook sponsored. Yeah, later. It was launched in 2019 February, and it sort of gave computer training and mentorship to 100 women between the ages of 17 and 26 in 5 states of India. We evaluated this program for DEF. I won't bother you with all the nitty-gritty, but it was amazing. So we decided as a first to do the whole evaluation online, because it was an online program. So just imagine sitting here in Delhi, I ran these online tests with a sampled beneficiaries in 5 very tribal and very back of the boondocks kind of areas in these 9 places. Just want to share this one thing. We had 84% response rate, which meant we sent our tests, our evaluation surveys and questionnaires. 84% of the women actually answered, girls actually answered, and 48% of them scored a perfect 10. So we had given them 10 questions to do with digital awareness, digital knowledge. These were 48% had perfect 10s and 71% scored a 9 and above. In fact, it was like the results were just, and we did a 360 degree, because the program was actually designed to each girl, or groups of girls were given mentors. So say somebody like you or somebody like Lalita, who would actually be calling them up once a week. We did all of the study of that, and it was amazing. The girls said that
they had sort of, they chose options, and they said that, confidence had, they spoke to us. We did Zoom interviews with them. They were so used to this technology. They were doing Zoom and everything on their, on the handsets that had been provided to them. And uh, the most interesting thing for me really was that, you listen to all of this, and obviously the most articulate of the lot comes, the ones with the most leadership skills. But when we did this, and it was like completely, random sample selection, and the results, so you actually have many more like them on ground, is what I wanted to really share with you. Yeah. Lalita, do you have any insight or question, since you were also part of the discussing panel? Why don't you come here? First of all, hats off to all of you. Great pleasure meeting all of you. Thank you for coming, and thank you for sharing so openly. It was beautiful being with you all in the same space and listening to you. Thank you so much. So it doesn't need much proving that our future lies with women like these. And in a way, some of the work that I do in Plus Trust, the profile of the women we work with is more or less similar. And the joy and the satisfaction that we get working with them is likewise similar. So it's always gives me great energy and joy to be with the women who are going to drive tomorrow. And the work that brought me here today is a collaboration with CDPP and Plus Trust, where we were looking at the question of how to continue funding these people after the initial fellowship. Like Plus Trust gives an initial fellowship, and that gets over in 6 months to 1 year. But after that, what happens? We all know that any startup may start with being bootstrapped, and Plus Trust sees itself as the bootstrap company, where we are part of them or they are part of us. But then they need more doses of investment for them to grow. And we are finding that the money needed is very small. The money is not big money, which is why our report, which some of you may have picked up, calls it microfunding. And it is very well within the scope of individuals. And in fact, Plus Trust itself till date has only individuals funding our work. We haven't yet managed to convince large donors that we exist or that what we do is useful. And we think that people like us, wherever we are all in a place to support work like this by making our own small contributions. It can be 500 rupees, it can be anything, it doesn't matter. But if many of us together contribute, if there are 10 people supporting Sushma, so if there are 10 people supporting Sushma Kumari, and every now and then she can holler out and say, look, I urgently need 1,000 rupees because something has gone wrong here. Sushma doesn't need any further support from anywhere. So we want to work towards that. And that is the idea I'd like to leave with the audience, that how can we all be there for such powerful and such amazing individuals, as they, along with their own struggles, think of their community, think of people around them, how girls should go to school, how people should get their entitlements, how we go beyond their help them go beyond their constraints by being there for them as individuals. So that is what we are trying to work, and I hope Amir and I will be able to come up with a platform that will be interesting for many of you who may want to be there for us. Thank you. So,
of them, almost close to 2,000. Each one of them serve 50 people a day round the year. You can imagine the impact they are creating in their area on a daily basis in the area of education, health, government services, financial transaction, and access to information of any kind. And not asking money from anyone, rather earning money. And also, so that's the kind of it numbers averages out and figure out that how this cadre is working. And one very futuristic thing that we have been thinking is that how they can also become a cadre for fighting misinformation, fake news, because that is a menace of the society that is coming up right there on the face of us. And I mean, they are doing it, but they can also do it as that reliable access to information as a check post in their area gradually. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा आप लोगों ने कहानी सुनाई. और इससे ज्यादा और आप लोग कहानी सुनना चाहते हैं तो एक एक को पकड़ के आप अलग अलग किनारे बैठ सकते हैं और इनसे दोस्ती करके इनके गांव जाके अच्छी अच्छी रोटी दाल खा सकते हैं, अच्छे अच्छी हवा का वो कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आमिर, आई थिंक वी आर डन. शुक्रिया.